So in the previous class, we discussed about the brachial plexus. Name the branches of brachial plexus. Name the branches of brachial plexus. Ma'am, external thoracic nerve, thoraco-dorsal nerve, pectoral nerve, long thoracic nerve, subscapular nerve, suprascapular nerve, axillary nerve, um, nerve to teres major, and musculocutaneous branch, radial nerve, and ulnar nerve, and median nerve. Okay. So total number of branches available in the brachial plexus are 12. Ma'am, 12. 12. Okay. So you can get 12 or 11 branches in the plexus. Previously, we discussed up to the musculocutaneous nerve. Nerve to teres major is a small nerve, and it supply to the teres major muscle, originate from the caudal aspect of the brachial plexus. Sometimes it is considered the branch of another nerve. Okay, so sometimes it is considered as a branch of subscapular nerve. Now come to the next branch, that is the video is visible to all of you. Next branch is Yes, ma'am. radial nerve. It originates from the C7, C8 and T1. Here you can see the assembling of the fibers C8 and T1. This branch is the thickest branch of the brachial plexus. It runs downward between the subscapularis and teres major muscle. Here you can see reaches to the, it enters in the towards the musculospiral groove. Okay, and then it comes over the craniolateral aspect of the limb. It comes to the craniolateral aspect of the limb. It's supplied to the extensor. It's supplied to the extensor of the arm region as well as extensor of the forearm and meniscus region. So this branch first runs caudally, then enters at the anterior border of triceps and posterior border of humerus. Then it enters at the musculospiral groove. Then continue distally, supplied to the muscles of arm and forearm region. It gives few cutaneous branches and divided into superficial trunk and deep trunk. Superficial trunk and deep trunk. The deep trunk emerges between the brachialis and extensor carpi radialis muscle.
and it's applied to the all extensor muscles as well as ulnaris lateralis. Here you can see the deep trunk. Here you can see the extensor carpi radialis and posteriorly ulnaris lateralis. So this deep trunk supplied to the muscles of this region. It joins with the branches of median nerve above the carpus. It joins with the branches of median nerve above the carpus and finally divided to form anterior common digital or dorsal, sorry, anterior common digital, dorsal. Here you can see the anterior common digital and dorsal medial abaxial digital. Like the radial artery, which is the important branch that supply to the anterior aspect of the forelimb, radial nerve supply to the anterior aspect of forelimb and it forms dorsal or anterior medial abaxial digital nerve as well as anterior common axial digital nerve. Anterior common digital axial nerve and all median aspect. Here you can see the branching. It's branched into the median abaxial digital nerve and common digital nerve. The next nerve is ulnar nerve. It originates from the C8, T1 and T2. C7, C8, T1 से radial आई, C8, T1 and T2 से ulnar. Okay, so this ulnar nerve passes downward along with the median nerve up to the middle of the arm and it reaches towards the olecranon process. It flexor muscles. Okay, radial supply to the extensor muscles and ulnar supply to the flexor muscles. This branch reaches to the humerus and olecranon tuberosity and detaches an articular branch to the elbow. An articular branch to the elbow and it runs in between the flexor muscles of reason. Here you can see the passage of the flexor nerve in between the flexor muscles. It above the carpal it divided into two branches, superficial and deep. Superficial and the superficial trunk. Here you can see the superficial trunk become anterior. The superficial trunk become anterior and form the anterior lateral abaxial digital nerve. Anterior lateral abaxial digital nerve and the deep branch continue over the posterior aspect. The deep branch continue over the posterior aspect, give fibers to the suspensory ligament and form lateral digital nerve. ठीक है, so ulnar nerve runs on the lateral aspect, lateral aspect of anterior side and lateral aspect of posterior side.
Clear? So ulnar nerve is splitted into two branches. Here you can see the two branches. The dotted branch is superficial branch, and the line, complete line, is the deep branch. So superficial side is run on the anterior aspect, so form the dorsal lateral abaxial digital nerve, and the complete line runs on the posterior aspect and form the posterior lateral abaxial digital nerve or palmar lateral abaxial digital nerve. Clear? That much is clear? इतना clear है? It runs, goes posteriorly towards the olecranon tuberosity, and in between the medial condyle of the humerus and the olecranon tuberosity, it passes through the flexor muscles of forearm and menas region. That's why it's applied to the flexor muscles of forearm and menas region. It goes downward. At the carpal region, it divided into two branches. That is the superficial trunk and deep trunk. Superficial trunk is further form dorsal lateral abaxial digital nerve, and the deep trunk form the posterior or palmar lateral abaxial digital nerve. ठीक है? So common digital nerve is arised from the radial. Anterior common digital nerve arise from the radial. Posterior common digital nerve, common axial digital nerve arise from the median, while the lateral, while the axial median abaxial digital nerve arise from the radial, and posterior lateral abaxial digital nerve arise from the ulnar. Clear? That much is clear. Now come to the next nerve, that is the median nerve. The median nerve originates from the C8 and T1 and here you can see the presence of musculocutaneous nerve. Along with the musculocutaneous nerve, the median nerve form a loop. It form a loop through which axillary artery passes. Here you can see the formation of a loop in between the musculocutaneous nerve and the axillary nerve. It passes on the downward, on the median aspect of the arm, crosses the elbow. It crosses the elbow and reaches beneath the pronator teres muscle. Here you can see the pronator teres muscle. Then it further continue over the radius in between the flexor carpi radialis and radial, descend further, reaches the lower third of the metacarpus and divided into two branches. Here you can see the lateral branch and the median branch. It divided into two branches, lateral branch and the median branch. The median branch forms the posterior median abaxial digital nerve, while the lateral branch continues the ulnar nerve downward as the posterior lateral abaxial digital nerve. Anterior lateral abaxial digital nerve और posterior nerve जो है वो ulnar से बनती है, but some fibers of median nerve is also contribute to form the posterior lateral nerve. ठीक है? And the median branch continue as a posterior median abaxial distal nerve, and here you see the two branches of median and lateral further divided into axial and abaxial. The abaxial one
Axial. Here you can see the axial is continued as a posterior medial common axial distal nerve, while the abaxial branches continue as a posterior lateral abaxial distal nerve, posterior median abaxial distal nerve. ठीक है, posterior lateral abaxial distal nerve with the ulnar branch and the posterior medial abaxial distal nerve. Clear? That much is clear? At the distal part of the limb, you know that in case of cattle, 2 digits are present. Clear? And center point is known as axial, while the lateral aspect is known as abaxial. That much is clear? That much is clear? ये क्लियर है कि नहीं है? Yes, ma'am. ठीक, तो इतना हमको पता है. अब उन्होंने क्या किया फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज, क्योंकि कौन सी ब्रांच किससे ओरिजिनेट हो रही है, तो एक उन्होंने बोला मीडियल एबैक्सियल, एक उन्होंने बोला लेटरल एबैक्सियल. ठीक, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो दोनों लेटरल एस्पेक्ट में है. लिम्ब का एक साइड मीडियल साइड पे फेस करेगा, एक साइड जो है वो लेटरल साइड पे फेस करेगा. जैसे हमारा ये हैंड है, अब ये हैंड जो है इसका एक लेटरल एस्पेक्ट टुवर्ड्स मीडियन साइड आ रहा है और एक लेटरल एस्पेक्ट बाहर की तरफ जा रहा है और एक सेंटर में एक्सिस चल रही है. ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, एक्सियल हो गई. दिस वन इज एक्सियल, this one is medial abaxial and this one is lateral abaxial. Clear? इतना समझ में आया? दो लिम्ब इस तरीके से हैं, तो ये पोर्शन जो है वो दैट इज द medial abaxial, that portion is lateral abaxial and center portion is axial. Clear? ठीक, अब एक होगा एंटीरियर एस्पेक्ट में, ठीक है, एक का एंटीरियर साइड में होगा और सेम प्रेजेंटेशन जो है वो हमें कहां मिलेगा, पोस्टीरियर साइड में. ये मीडियल एबैक्सियल किस साइड का हो गया, दूसरे लिम्ब का. ठीक है, और ये लेटरल एबैक्सियल हो गया. अब ये कहां मिल रहा है हमें, पोस्टीरियर साइड. क्लियर? दो लिम्ब हो गए, दो लिम्ब के मीडियल हो गए मीडियल एबैक्सियल, दो लिम्ब के लेटरल एबैक्सियल. अगर हम दो लिम्ब मानते चले, बाकी हम एक लिम्ब का ये एंटीरियर एस्पेक्ट है और एक लिम्ब का ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है. क्लियर? That much is clear? Anterior and posterior, anterior medial abaxial, anterior lateral abaxial and common axial, anterior common axial
posterior medial abaxial, posterior lateral abaxial, and posterior common axial. Clear? That is clear. The radial nerve supply to the anterior medial abaxial artery and anterior common axial nerve. Sorry, anterior medial abaxial nerve and anterior common axial nerve. Clear? Anterior common axial digital nerve, anterior medial abaxial digital nerve. That comes from the radial nerve. Clear? The median nerve supplied to the posterior common axial digital nerve, supply as a posterior common axial digital nerve and posterior medial abaxial digital. ठीक है? And the lateral aspect is supplied by the ulnar nerve. However, few fibers of median nerve also goes to the posterior lateral abaxial distal nerve. Some fibers of median nerve is also continue as a posterior lateral abaxial distal nerve, and ulnar nerve supplied to as a posterior lateral abaxial distal nerve and anterior lateral abaxial distal nerve. Okay? And radial nerve continue as a anterior common axial digital nerve and anterior median abaxial digital nerve. इसमें कहीं किसी को कोई डाउट परेशानी दिक्कत कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आ रही हो So that is about the nerve supply to the forelimb. We completed about the muscles of forelimb, we completed about the blood supply of the forelimb, and we completed about the nerve supply of the forelimb. अब यहाँ किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही हो? Extensor muscles got nerve supply through the radial nerve, and the flexor muscle goes blood supply through the ulnar nerve. डाउट जो चीज नहीं समझ में आ रही हो
बता दो भाई, तुम लोग के डाउट हो तो तुम लोग बता दो, नहीं तो फिर मेरे डाउट स्टार्ट होंगे तो तुम लोग को दिक्कत होगी। मैम रेडियल की बात कीजिए। हाँ बोलो किसले। मैम रेडियल नर्व की ब्रांचेस एक बार बता दीजिए। रेडियल नर्व की ब्रांचेस, हाँ शिवम बताओ। मीडियन नर्व के बारे में। वीडियो में क्लियर था कि मैं बोर्ड पे बताऊं? किस चीज के साथ कंफर्टेबल हूँ? बोर्ड बोर्ड में है। First, we will start with the radial. Radial nerve is the thickest branch of the brachial plexus. It originates from the brachial plexus. So, radial nerve is the thickest branch of the all nerves. It originates from the brachial plexus and it passes between the anterior aspect of triceps, anterior border of triceps, and the posterior border of humerus. So this muscle, this nerve goes like this, and here you will find the triceps muscle. So it enters in this area and then it emerges out on the cranial aspect. Okay, where the extensor muscles we will encounter? Where you will find the extensor muscles? Anterior lateral aspect. Anterior lateral aspect. Anterior lateral aspect. ठीक है? So now nerve is on the anterior aspect. ठीक, तो यहाँ पे हमें मसल्स मिलेंगी और ये ट्राइसेप्स क्या है, एक्सटेंसर है कि फ्लेक्सर है आर्म रीजन की? एक्सटेंसर, ठीक है ना? तो ये जो है वो एक्सटेंसर है. So the radial nerve supply to the extensor muscles of arm region as well as forearm and malleus region because this nerve comes on the anterior aspect. ठीक है? It passes at the anterior border of the triceps. तो triceps भी यहाँ पर extensor है. यहाँ पर आके नीचे extensor muscles मिलेंगी forearm and malleus region की anterior aspect में. So it supply to all these aspects and reaches, ठीक है, at the level of the metacarpus, at middle of the metacarpus. ठीक है, ये मेटाकार्पस हो गई, ये phalanges हो गई. So at the level of the middle of the metacarpus, ये हम मान के चल रहे हैं this is the anterior face. This is the anterior face of limb. ठीक, या फिर हम इस तरीके से भी ब्रांचिंग कर सकते हैं anterior and posterior. Which is comfortable? फ्रंट व्यू को anterior मानना है कि हम इस व्यू को anterior और posterior मानेंगे? This is comfortable? ये जो बॉर्डर है ये anterior हो गया, ये बॉर्डर जो है वो posterior हो गया. ये comfortable है? Yes ma'am. लेकिन उसमें अपन लिम्ब के एक्सिस और एबैक्सियल पोर्शन को नहीं बता पाएंगे. That's why we using the front face, क्योंकि इसमें हमको दोनों डिजिट दिखती हैं. उस तरीके से हमको सिर्फ सिंगल फेस दिखेगा क्योंकि हम 2D में बात कर रहे हैं, तो हम फ्रंट फेस को एंटीरियर मानते हैं. ठीक है,
वहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? नो मैम। ठीक, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि दिस इज द anterior face and this portion is abaxial, medial abaxial, ठीक है? This portion is lateral abaxial and this center portion is axial. Clear? Clear है चीजें? यस मैम। So the radial nerve is divided on its medial aspect into two branches. One is medial abaxial and another one is anterior common axial digital nerve. ठीक है? Anterior common axial digital nerve. ठीक? And another branch is anterior medial abaxial digital nerve. Clear? ब्रांचेस समझ में आ गई? कोई भी लिम्ब का जो डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ एरिया है, डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब है, जहाँ डिजिट के बारे में हम बात करेंगे तो डिजिट में एक एक्सियल पोर्शन होगा और दो एबैक्सियल पोर्शन होंगे. उन दो एबैक्सियल पोर्शन को अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, जो मीडियल साइड का एबैक्सियल है उसे मीडियल एबैक्सियल बोला और जो लेटरल साइड का एबैक्सियल है उसे लेटरल एबैक्सियल बोला. ठीक है? अब जो नर्व आ रही है वो नर्व आके दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है. एक तो मीडियल साइड के मीडियल पोर्शन के एबैक्सियल को सप्लाई करेगी और एक सेंटर में चलेगी और ये सब कहाँ चल रहा है? एंटीरियर फेस ऑफ द लिम्ब. क्लियर? यस मैम। ठीक. अब मीडियन की बात करते हैं. फॉर्म अ लूप along with the musculocutaneous for the passage of the axillary artery and it supply on the posterior aspect. और posterior aspect में हमें कौन सी मसल्स मिलेंगी? posterior aspect में कौन सी मसल्स मिलेंगी? फ्लेक्सर। फ्लेक्सर. Plexus muscles of forearm and Venus region. So posterior aspect में the medial nerve is run in between the radius. Radial का जो medial aspect जो बिल्कुल clearly visible होता है उसके, और यहाँ पर flexor carpi radialis muscle जो है यहाँ पे हमें medial nerve चलती हुई दिखेगी. ठीक है? When this medial nerve passes distally at the metacarpus, ठीक है? अब ये हमारा क्या था? एंटीरियर फेस था. अब ये हमारा पोस्टीरियर फेस लिम्ब का. ठीक है? और ये so this one is axial face, medial abaxial and lateral abaxial face. Clear है एकदम? ठीक. So medial nerve is also divided into branches, superficial and deep branches, and median is divided into lateral and medial branch. Median first divided into lateral and medial branch. Okay. And these lateral and medial branches further divided into axial and abaxial branch. ठीक है? ये lateral हो गई, sorry medial.
ये lateral branch हो गई, and these branches further divided into abaxial and axial. Clear? Okay. So further, first is divided into lateral and medial, and then axial and abaxial दोनों साइड की. तो दोनों साइड की जो एक्सियल है वो सेंटर में यूनाइट होकर कंटिन्यू करती है एज अ पोस्टीरियर एक्सियल कॉमन डिजिटल नर्व. पोस्टीरियर एक्सियल कॉमन डिजिटल नर्व. इतने में कोई कंफ्यूजन? अब बची दोनों साइड की एबैक्सियल, मीडियल एबैक्सियल एंड लेटरल एबैक्सियल. ठीक है, क्लियर? medial abaxial and lateral abaxial, so they continue as a posterior medial abaxial nerve, distal nerve, and posterior abaxial lateral digital nerve. ठीक है, ये ब्रांचिंग समझ में आ गई रेडियल की और मीडियन की. ठीक, अब क्या हुआ ये तो समझ में आ गया. एक और नर्व चल रही थी, दैट इज द अल्नार नर्व. इट आल्सो रन ऑन द posterior aspect. It runs on the lateral aspect. ठीक है, ये posterior lateral aspect में चल रही थी अल्लार. तो अल्लार में posterior lateral aspect में चलते हुए दो ब्रांचेस दी. एक तो anterior के lateral aspect पे आई और एक posterior के lateral aspect पे आई. एंटीरियर के लेटरल एस्पेक्ट पे आई और पोस्टीरियर के लेटरल एस्पेक्ट पे आई. तो एंटीरियर के लेटरल एस्पेक्ट पे तो कोई नर्व थी नहीं थी ना. सो इट कंटिन्यू एज अ एंटीरियर लेटरल एबैक्सियल डिजिटल नर्व. क्लियर? एंटीरियर लेटरल एबैक्सियल डिजिटल नर्व. और पोस्टीरियर के पार्ट में एक ब्रांच मीडियन की भी चल रही है और एक ब्रांच अल्नार की भी चल रही है. दो हो गई ना? दो हुई कि नहीं हुई? अगर मीडियन की ब्रांचिंग समझ में आ गई होगी तो इतना समझ में आ गया होगा कि पोस्टीरियर के लेटरल एस्पेक्ट में दो चलेंगी. बताओ भाई, आया है कि नहीं आया समझ में? आया है कि नहीं आया है? रेडियल की ब्रांचेस समझ में आ गई? यस मैम, रेडियल की आ गई. मीडियन की समझ में आ गई? नहीं मैम, मीडियन के थोड़ा. क्या कंफ्यूजन है मीडियन की में? चलो रेडियल तो समझ में आ गया ना, तो हम रेडियल को हटाते हैं. मीडियन में क्या कंफ्यूजन है? ये मीडियन नर्व हुई, ये इसकी एक मीडियल ब्रांच हुई, एक इसकी लेटरल ब्रांच हुई. इतना समझ में आया? बलवंत, इतना समझ में आया? यस मैम. ठीक. अब ये फर्दर डिवाइडेड हुई एक्सियल एक्सियल
and abaxial abaxial. यहां तक समझ में आया? यस मैम. अब ये दोनों एक्सियल ने मिलकर बनाई कॉमन एक्सियल. इतना समझ में आया? यस मैम. ये कहाँ चल रही थी? पोस्टीरियर में, डिजिट टीरिया में. पोस्टीरियर डिजिट में, डिजिट में पोस्टीरियर एस्पेक्ट में चल रही थी. यस मैम. ठीक है ना? तो फोर्स कहाँ है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, डिजिट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में. और क्या है? कॉमन एक्सियल है. सो इसको क्या नाम दे दिया? पोस्टीरियर कॉमन एक्सियल डिजिटल नर्व. क्लियर हो गया ये चीज? यस मैम. ठीक. अब बची क्या? मीडियल एबैक्सियल और लेटरल एबैक्सियल. ये कहाँ चल रही है? ये भी पोस्टीरियर डिजिट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, डिजिट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में. इतना ठीक है? ये चीज ठीक है? ठीक. तो ये डिजिट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में चल रही है. सो दीज नेम्ड एज पोस्टीरियर मीडियल एबैक्सियल डिजिटल नर्व, पोस्टीरियर लेटरल एबैक्सियल डिजिटल नर्व. नॉमेनक्लेचर समझ में आया? पोस्टीरियर मीडियल एबैक्सियल डिजिटल नर्व, क्योंकि ये डिजिट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के मीडियल साइड के एबैक्सियल में चल रही है. क्लियर हुआ? यस मैम. That much is clear? यस मैम. Likewise, it named posterior lateral abaxial digital nerve. That is clear? Because this nerve runs on the lateral aspect of the posterior side of the digit on the abaxial portion. Clear? यस मैम. Okay. So this is about the classification or branching of the median nerve. Okay. That much is clear? यस मैम. क्लियर है. ठीक. अब एक नर्व और बची अल्नार. ये भी नीचे जाके ब्रांच होती है. ये नीचे ब्रांच कैसे होती है? ये दोनों साइड के लेटरल एस्पेक्ट में आती है, पोस्टीरियर भी और एंटीरियर भी. ठीक है? और ये कवर करती है एबैक्सियल साइड, एंटीरियर लेटरल एबैक्सियल एंड पोस्टीरियर लेटरल एबैक्सियल. क्लियर? क्लियर हो गया? यस मैम. अब पोस्टीरियर लेटरल एबैक्सियल और एंटीरियर लेटरल एबैक्सियल हो गई, तो एबैक्सियल डिजिटल नर्व हो गई. ठीक है? अब यहां हमें दिख रहा है कि एक पोस्टीरियर लेटरल एबैक्सियल दैट इज द ब्रांच ऑफ द मीडियल नर्व ऑलरेडी प्रेजेंट है पहले से. यस मैम. ठीक. So on the posterior lateral aspect, you will find the branches of median nerve and ulnar nerve. Clear हो गया? यस मैम. अब किसी को ब्रांचिंग में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी तक हमने जितना भी पोर्शन कवर किया है उसमें किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो? क्योंकि अब सेकेंड मिड टर्म के एग्जाम आ गए हैं, तो किस डाउट हो, कोई पर दिक्कत हो. एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू शो अ वीडियो फॉर द नर्व्स अटैच्ड एट द लिम्ब एंड इट टेक टाइम. सो अगर किसी को उस ड्यूरेशन में कोई डाउट या कोई परेशानी समझ में आती है तो वो पूछ सकते हैं अभी. अबाउट फॉर द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड in the next class we will continue with the muscles, blood supply and nerve supply of the hind limb. And
I will try to show you a video about the brachial plexus. Okay, that's all for today's class. Thank you very much.